नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम फिर से बात करेंगे हमारी लोकसभा में हुए अविश्वास प्रस्ताव की, और विशेषकर उसमें जो मणिपुर को लेकर जो अभी भी कांग्रेस वाले हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो भाई क्या चक्कर क्या है, इतना परेशान क्यों है मणिपुर से? हमारे साथ हैं सावियो रॉड्रिग। वेलकम सावियो, हाउ आर यू? कैसे आप? Namaste. I'm good. I'm doing good. Thank you so much, Sanjay ji. सावियो, आप मणिपुर पर काफ़ी अध्ययन आपने किया हुआ है, काफ़ी यू हैव स्टडीड अ लॉट, और आपने देखा होगा कि जो पूरी अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा हुई, और आपने ये भी देखा होगा कि विपक्ष यानी जो टुकड़े टुकड़े इंडिया है उसने क्या बातें कही, और होम मिनिस्टर ने, अमित शाह ने उसका कितना विस्तार से, he gave a detailed reply more than 1 hour. तो इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही बातें दोबारा दोहरा दी। तो व्हाट इज योर असेसमेंट, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? संजय जी, मैं पिछले हफ्ते मणिपुर गया था. I spent 60 hours in Manipur and I traveled the length and breadth of Manipur. Met up with people from both communities. दोनों समुदाय के लोगों से मैंने मिला था. दोनों समुदाय के लोगों के रिलीफ कैंप्स पे गया था, चाहे वो मैती के रिलीफ कैंप हो या कुकीज़ के रिलीफ कैंप्स हो. मैं दोनों तरफ से गया था, जो मैती के एरिया था और जो कुकीज़ के भी एरिया था, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे मैतीज़ और कुकीज़ के. वहाँ पे मैंने I met up with the people there was a family who's Can you increase the volume a little bit? yeah. So I met up with a family of one of the mighty family that was killed that morning when I reached into Manipur itself. I met up with the parents, I met up with the wife and the daughters and the one son, very young. He was a 40-year-old man who was killed. The alleged militants who were allegedly the Kuki militants, and that's come out in the reports as of now, that they had attacked at 3:30 in the morning. You know, they were unarmed. The people living in that Meiti village were unarmed. I also met up similarly with the Kuki family who lost a 26-year-old boy. This 26-year-old man was also attacked during the conflict and the violence that happened, and he succumbed to the injuries. So the grandmother was somebody I visited. I visited the funeral services as well. Now the important सबसे एक चीज हमें याद रखना है कि दोनों तरफ से लोग घायल हो रहे हैं और हत्या भी हो रहा है लोगों का. यहाँ का कोई जैसे लोग अफवाह फैला रहा था कि यहाँ के रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है कि क्रिश्चियंस हिंदू को मार रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू क्रिश्चियंस को मार रहे क्योंकि वो एक बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के गवर्नेंस है वहाँ पे. पर ये सच्चाई है नहीं. अगर आप ग्राउंड पे जाकर लोगों से बात करोगे, चाहे वो मेहती हो या कुकीज हो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग एक दूसरे को हिंदू और क्रिश्चियन की वजह से नहीं मार रहे. वो चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, क्या वो मेहती है या कुकी है. अगर एक कुकी एक मेहती की जगह पे आ जाएगा तो वो मेहती के लोग उसको जरूर मारेंगे, खत्म करेंगे. दूसरी बात यह है कि अगर एक मेथी के बंदा कुकी की जगह पे जाएगा तो कुकी उसको खत्म करके रखेंगे. तो ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं किसी एंगल से. बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में, जैसे फॉरेन जर्नलिस्ट जो अफवाह फैला रहा है कि ये हिंदू क्रिश्चियनों को अटैक कर रहा है या क्रिश्चियनों को दबाना चाहता है वहाँ पे, क्योंकि कुकीज़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं. ये सच नहीं है. ये मसला, ये प्रॉब्लम, ये सीरियस प्रॉब्लम है, और ये सीरियस प्रॉब्लम है लैंड एक्विजिशन का, लैंड कंट्रोल का. और ये लैंड इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं. वन क्वेश्चन, जहाँ तक मेरी सूचना है
कि नॉन क्रिश्चियन कुकीज भी हैं और नॉन हिंदू मेतेईज भी हैं, ये कुछ क्रिश्चियन correct. मेतेईज भी हैं। That's और correct. जो कुकीज हैं वो क्रिश्चियन मेतेईज को भी मार रहे हैं, Correct. और जो मेतेईज हैं वो नॉन क्रिश्चियन कुकीज को भी मार रहे हैं। इज इट करेक्ट? That is the actuality. So then क्या है कि वो लोग violence कर रहे हैं, नहीं, not because they are Christians and Hindus. The violence is because Maitis and cookies. That's precisely the point I'm making, right? और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वहां पे लोग लैंड, दोनों कम्युनिटीज के लोग लैंड को कंट्रोल करना चाहता है, लैंड को बचाना चाहता है। मैती अपने टेरिटरीज को बचाना चाहते हैं, कुकीज अपने टेरिटरीज को बचाना चाहता है। और ये भी हो रहा है कि दोनों कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के लैंड मासेस को ज्यादा बनाना चाहते हैं। क्यों? अंत में ये कंट्रोल लैंड का है, और लैंड इसलिए क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट ट्रेड मणिपुर से जो होता है वो है नार्कोटिक्स ट्रेड। It is a narcotics trade that is driving the need for the land in Manipur, right? The estimated business potential of the narcotics trade out of Manipur is 70,000 crore. How much? 70,000 crore. My God. ये है एक हकीकत है। The estimated value of the narcotics trade, if the land are acquired and everything is brought together, is 70,000 crore. और आपको ये जानना जरूरी है क्यों लोग वहां पे, कुकी के लोग जो है या नागा के लोग, क्यों लोग वहां पे, या कुछ मैती के भी लोग होंगे जो पॉपी कल्टीवेशन करता है, जो हिल्स के ऊपर होता है। क्योंकि यदि आप एक राइस प्लांटेशन डालते हैं वहां पे, तो आपको करीबन 1 लाख या 2 लाख रुपया मिल सकता है महीने या 3 महीने के अंदर। यदि आप पॉपी को कल्टीवेट करते हो तो आपको 12-13 लाख महीने का मिलता है। तो वहां पे मणिपुर के अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रहा है। तो ये मिलिटेंट लोग हैं या ड्रग्स वाले जो लोगों का धंधा करते हैं, ये कुकी और जो वो मैती या नागा कोई भी हो वहां पे, अगर वो कल्टीवेशन कर रहा है या फार्मिंग कर रहा है वहां पे, उनको अप्रोच करके ये बोलता है कि आप इतने पैसे बना सकते हो, आप पॉपी कल्टीवेशन करो। तो ज्यादा से ज्यादा पॉपी कल्टीवेशन हिल्स पे होता है। इसलिए ये प्रॉब्लम पीपल ऑफ द वैली और पीपल ऑफ द हिल्स का है, क्योंकि मैती पीपल ऑफ द वैली है और कुकी पीपल ऑफ द हिल्स है। और नार्कोटिक्स ये सब करवा रहा है, जिसको कंट्रोल करना, जो कंट्रोल करना चाहता है नार्कोटिक्स ट्रेड को, इसके वजह से ये सब आज अभी हुआ है। इट इज द लैंड कंट्रोल, इट इज द नार्कोटिक्स कंट्रोल। इसमें पॉलिटिशियंस शामिल है, इसमें ब्यूरोक्रेट शामिल है, और इसमें लोग, इनोसेंट लोग शामिल है, क्योंकि ये कंट्रोल है लैंड का नार्कोटिक्स के वजह से। यदि आप देखोगे कि क्या हुआ है, ये एक डोमिनेंट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो था तो डेकेड से चल रहा था, लेकिन कभी ऊपर नहीं आया है। इट वाज नेवर एक्टिव। अभी उसको एक्टिव किया गया है। अब पिछले बार जब इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मणिपुर के अंदर, वो कुकीज और नागास के बीच में है। वो फाइट भी टेरिटोरियल कंट्रोल का था, क्योंकि अगर आप मणिपुर को देखोगे एक सर्कुलर तरफ से, लाइक अ सर्कल, द स्मॉल सर्कल इन द इनसाइड इज द माइटी सर्कल, the large circle around the Maiti is the Kuki, and the even outer circle around the Kukis and the Maitis is the Nagas, right? So any form of oppression happening at every level impacts all three of them. तो कुकी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, सेपरेट यूनियन टेरिटरी चाहिए, सेपरेट कुकी लैंड चाहिए। मैती के लोग बोल रहे हैं कि हमें मणिपुर चाहिए, हम मणिपुर के इंडिजिनस लोग हैं। ये फाइट इनको वापस उठाया है, बल्कि असली फाइट है नार्कोटिक्स। और जो भी नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स को में कंट्रोल कर जैसा रहा है, बताते हैं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में या कुछ ऐसे मीडिया में आता है कि साहब की इट इज मेनली कुकीज हु आर इन्वॉल्व्ड इन नार्कोटिक्स, बट माय इंफॉर्मेशन इज कि
अभी तक जो इनके जो ट्रेड रिलेशंस थे उसमें मेनली दी ग्रोअर्स वर कुकीज एंड ट्रेडर्स वर मैथेज, और अभी जो है वो दोनों अपना अपना स्फीयर बढ़ाना चाहते हैं. इज दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? Yes, absolutely. See, you got to understand that the narcotics growth is in the hills, but the transportation is not happening from the hills. The transportation has to happen from the valleys to reach other places. So the growers and a part of the controllers of the narcotic growth is in the hills, but the distribution has to go through the valley at this point of time. That's how the thing is. So, more importantly, why we have to look at this very seriously, and which is something that has got me very worked up, is the High Court order came on April 17th, if I remember well, and there were certain protests, peaceful protests that were being done by the tribal communities since that order came, to include for not an order but a directive by the High Court to the Manipur government on the ST status of the Maitis, to reply back within 4 weeks. But on April 29th, there were 3 foreign representatives of news agencies already in Churachandpur, and one was an Indian representative of a foreign funded news portal. Okay. Okay. I hope it Now was not the Wire violence the broke Liar. out. The violence broke out on May 3rd, 2023, right? But what were they doing there on April 29th? How did they know? I mean, none of the Indian channels were aware of They it. must have been egging it on. वो आपने देखा ना कि किस तरह से कई बार हमारा मीडिया जो है वो जानबूझ के कहता है कि भाई तुम इस तरह का काम करो so that they get TRPs, तो वो TRPs का काम कर रहे होंगे वहाँ. Yes, but in all fairness, you wouldn't have had a very popular Middle Eastern channel there to cover a protest of a peaceful protest of the cookies to oppose an ST, because they wouldn't go to any other state having peaceful protests covering, protests against, say, ST rights. So, what was a popular Middle Eastern channel doing there? What was a popular German channel doing there? And what was a popular UK channel doing there? They certainly weren't there to cover the peaceful protest. Al Jazeera, DW, BBC, right? I cannot comment on that, but I can tell you that when we investigate, Sanjay ji, we go to the bottom. You know that, right? Yeah. So the point is, they were there on April 29th, which is very important point to be noticed. Then suddenly you had this immense flare up that the Hindus are attacking the Christians. Meithis were portrayed as Hindus targeting the cookies that were Christians. Okay, but it was not the case. Something happened on May 3rd that really triggered this off. There was a peaceful protest planned. Then you had the burning of the Anglo Cookie Centenary Gate that happened, which further aggravated the cookies, and the cookies went ballistic, and so did the Meithis. Then you had the Meithis also reportedly, there were allegations that the garrisons were stormed where arms were looted, and people claim that it's the Meithis, but there is official information that needs to come out, right? Then there are claims that the cookies have got their weapons from Myanmar. So these are all parts of investigation. But what is the truth is that they were with weapons. I moved on the streets. I was blocked by people who had weapons with them, sophisticated weapons. The only reason I was allowed to go was because I was media. And I was only stopped at one area where there was firing. Now imagine if I had a cookie sitting in my car or a Mighty sitting in my car and I went in opposite directions.
So I had, my people were Gurkha people, people who we were able to go across, though they also faced a little struggle. Now, how would so much of weapons come at such a time with them if it was not pre-planned? It was as though the conflict from both sides were ready. Now you have the issue of the very horrific stripping of the women and the rape of the 21-year-old that happened. People are saying that, you know, this is done deliberately because of the parliamentary session and all. How does that even matter? There have been Meitei women, according to their own admission, that have been raped. The Meitei women told me that they cannot come out and complain because it will be a social stigma. The Cookies also had other cases of rape, but they are not all come out and filed a complaint because it is a social stigma in that society. But you have to go on the ground to see the reality that I had people driving in vans, and in those vans, these guys are dressed up as commandos, carrying sophisticated weapons. That is not new India, Sanjay ji. वो एक नया भारत नहीं है. वो एक भारत और एक मणिपुर है जो एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है या ऑलरेडी आ चुका है. इसलिए मेरा रिक्वेस्ट था गवर्नमेंट से जब मैंने वापस आया था कि सबसे पहले चीज जो वहां पे होना चाहिए है कि डिसआर्ममेंट करना है. जिनके पास वेपन्स है वहां पे उसका वेपन्स को कॉन्फिस्केट करना जरूरी है. दे हैव टू सरेंडर देयर आर्म्स. तभी पीस टॉक्स हो पाएंगे वहां पे, नहीं तो पीस टॉक्स नहीं होने वाला है वहां पे. इतने हेट है इन लोगों के अंदर, इतने हेट भरा हुआ है इन लोगों के अंदर. बोल बोल के कुकीज बोलता है कि हमें कुकी लैंड चाहिए, मैतीज बोलता है कि हम मणिपुर के लोग हैं, कुकीज मणिपुर के लोग नहीं है. तो भारत माता किस प्रकार से उनको देखेंगे फिर? हाउ विल यू लुक एट देम? यस, देयर आर इलीगल इमिग्रेंट्स. और मैं इसमें थोड़ा सा अगर इतिहास में जाएं तो ये इंसर्जेंसी जो है वो तो मणिपुर में हर ग्रुप करता रहा है. करेक्ट. बल्कि जो सबसे लंबी इंसर्जेंसी जो मणिपुर में हुई है वो तो मेरे ख्याल से मेतेईस की ही हुई है. कि इनके जो ग्रुप्स थे, प्रीपाक था, एक पीएलए था. अभी कुछ दिन पहले जनरल पीआर शंकर, एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी, वो आए थे हमारी चैनल पे. वो रह चुके हैं ब्रिगेड कमांडर हैफलॉन्ग. और ये पूरा जो वेस्टर्न आपका मणिपुर है वो उनके चार्ज में था. और उन्होंने मुझे बताया, ये 2007 के आसपास की बात है, कि पूरा एरिया जीरीबाम से लेकर और चूराचंदपुर तक का वो लिबरेटेड जोन था पीएलए का. करेक्ट. और पीएलए जो है एक मैतेई ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो एरिया है जीरीबाम से चूराचंदपुर को लेके ये नॉन मैतेई एरिया है, लेकिन उसको उन्होंने लिबरेटेड जोन कर रखा था पूरा. और ही वाज द वन हु वेंट इन एंड ब्रॉट इट बैक. तो ये मैं गया था मणिपुर 3-4 साल पहले, और वहाँ पर तो बहुत सीरियस इंसर्जेंसीज रही हैं, जैसा कि बताया मुझको मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेरे मित्र थे उन्होंने. तो इसको जो है कैसे ये कह सकते हैं कि भाई ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट है. यहाँ तो इंसर्जेंसी सबकी सबने कर रखी है. आज भी बताते हैं. आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू. व्हेन आई हैड गॉन टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई डोंट नो हाउ इट इज टुडे. वहां पर आप हिंदी फिल्म नहीं दिखा सकते इम्फाल में. Not to my knowledge, no. जब मैं था वहाँ पे सब बंद था. So I wouldn't know whether I would get a chance to look at it. वो जो the old state of Kanglai Park is something that is the aspiration. नहीं, पर आपने बहुत अच्छी मुद्दा उठाया पीएलए के बारे में. अगर आप देखोगे वहाँ पे
ओके, चाहे वो पीएलए हो या कुकीज के मिलिटेंट्स जो है वहाँ पे। आई टेल यू वन वेरी शॉकिंग फैक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान रखना जरूरी है और बहुत जरूरी है कि ये जो मिलिटेंट्स अपने एरिया पे घूम रहा है वो अपने ही फ्लैग लेकर घूम रहा है वहाँ पे, अपने ही फ्लैग्स के अपने गाड़ी पे लेकर घूम रहा है वहाँ पे। उसका मतलब क्या है? क्या आप इंडिया को मानते नहीं है? अपने खुद का फ्लैग, खुद का राज्य बनाने की कोशिश कर रहे तुम लोग। और खुद का राज्य क्यों चाहिए? क्योंकि जो भी है वहां पे वो ड्रग्स को कंट्रोल करना चाहता है। ड्रग्स सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड है वहां पे। यदि आप ड्रग्स को हटाएंगे और मिनरल्स की ओर चले जाएंगे तो दैट इज इवन अ बिगर मार्केट। सो देर इज Manipur is very blessed in its soil and in its abilities for minerals and for talent, actually, in people skills. They can be developed. But unfortunately, it is not development that is happening in Manipur. It's not the people of Manipur that are benefiting. And it doesn't matter whether they are Meiteis, Kukis, Nagas, Gurkhas, or even the North Indians that are there. I met a businessman who's very successful. He's from UP. He's been living there from the time of his birth and doing extremely well for himself. So there are people from other parts of India doing well there as well. So ye kyun? I know, Why I know. is this hate? I met some people from Bihar. I met some people Yes, from Nepal in Imphal. yes, and they're doing well. They're doing well. So ये जो मसला है मणिपुर का, मैं सिर्फ लोगों को बताना चाहता है कि पहली चीज, हम जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है या अपने ग्रुप्स में एक्टिव है, हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि ये हिंदू क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। ये एक ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है और ये ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को फिर से उठाया है क्योंकि कोई है वहां पे, कोई कुछ ग्रुप है वहां पे जो नारकोटिक्स को कंट्रोल करना चाहता है। और नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए आपको लैंड की कंट्रोल लेना जरूरी है वहां पे। ये सब इंटरट्वाइंड है। यू कैन नॉट लुक एट वन ऑफ द इश्यूज आइसोलेटेड। बहुत सारे मेरे क्रिश्चियन के मित्र हैं, मुझे लिखकर बोल रहा है कि बीजेपी क्या कर रहा है, हिंदू क्रिश्चियनों को मार रहा है वहां पे। मैं बोला आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ आ जाइए ना मणिपुर, देखिए आप क्या ग्राउंड में क्या हकीकत है। वही मैं हिंदू लोगों को बोल रहा है जो बोल रहा है कि कुकीज बाहर का है, कुकीज म्यांमार का है। जो कुकीज इंडिया में है और अपने आप को इंडियन मानता है, जो आईएएस में है, आईपीएस में है, आईएफएस में है, जो इंडिपेंडेंस के बाद आया था यहाँ पे, पहले आया था यहाँ पे, अब उसको नॉन इंडियन कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं बोल रहा है कि सबसे पहले तो 1836 में लाए थे, अंग्रेज लाए थे इनको। आप सही बोल रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स म्यांमार से आ रहा है, वो सच है। और वो भी कुकी चिन के ही लोग हैं। पर जो है यहाँ पे उसको आप नॉन इंडियन कैसे बुला सकते हैं? उनके क्या गलती है? जब बंटवारा हुआ था उस समय या उसको लाया गया था उस समय, इलीगल इमिग्रेंट है जो है वो इलीगल इमिग्रेंट है और भारत सरकार को इलीगल इमिग्रेंट को आइडेंटिफाई करके वापस भेजना चाहिए। वो इलीगल इमिग्रेंट जो आ रहे हैं म्यांमार से, वो क्यों आ रहा है? वो कल अमित शाह ने तो काफी घटिया इसके बारे जगह में है। डिटेल बताया था ना कि उनको बायोमेट्रिक्स करके और उसको नेगेटिव लिस्ट में डाला जा रहा है। और वो कर रहा है, वो भारत सरकार कर ही रहा है। पर आप जैसे जैसे कुकी लोग बोलते हैं कि मैती ये खराबी है, मैती के बारे में मैती लोग बोलते हैं कुकी लोग का ये खराबी है। यार अंत में आप सब लोग मणिपुर के ही लोग हैं, मणिपुर में रह रहे। बंटवारा क्यों करना चाहते हो आप लोग? क्या फायदा है उसमें सिवाय अपने पर्सनल ईगोस का, जो उनका पॉलिटिकल लीडर्स का? लोग तो काम चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। देखो मणिपुर को, इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, सर्विस सेक्टर्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है वहां पे। इतनी ब्यूटीफुल जगह है, अब उनको डेवलप करने क्यों नहीं दे रहे? Manipur can actually become the jewel of Northeast. And if you look at growth, geopolitical growth,
You will see there's a lot of work going to happen within the ASEAN sectors, within the Eastern country sectors. Why should Northeast be left behind because of a conflict? Why should Manipur be left behind? So my appeal to the people of India, in particular the Mighties and the Cookies, आपका जो आपस के जो समस्या है मैं जानता हूं, समझ सकता हूं, लेकिन वो देश और मणिपुर के ऊपर नहीं है. एक दूसरे से जाके मिल के पीस करो, लड़ाई मत करो, वहां पे एक दूसरे को काटो मत, हैवान की तरह काट रहे हैं. कौन से एरिया में गए थे? Well, I went to I mean, Moirang, Kingpo, I can't pronounce them also, this is difficult. Bishnupur. You tell me the names, I'll say yes or no. Churachandpur? No, I didn't reach Churachandpur. I was about 5 kilometers away from there. So it was Katwe or something. The one before, the last stop was the one before Churachandpur. Torbang? Yes. जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था? Yeah, just before the incident. Then there's Morang, there's Bishnupur, there is KPI, everything right up till the end in KPI. And internally, of course, because More? No, not right up till More. No, MOREH. No. More is in the other direction. More is towards the east. So अब आपको क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? See, the first जो कल अमित शाह जी ने बताया कि जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना? अमित शाह जी की कल जो मतलब सॉरी डे बिफोर yesterday. See, there have been talks, I'm aware, that the government is having with the concerned people who are a part of the conflict and who are in a way who can curtail the conflict. पर एक चीज हमें जरूर करना है और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि डिसआर्ममेंट इमीडिएटली होना चाहिए. वहाँ पे जो भी हथियार है, जो भी मिलिटेंट के पास है, जो भी ग्रुप्स के पास है, चाहे वो मैती हो या कुकीज हो, उनको ये हथियार उनके पास होना नहीं चाहिए. चाहे वो मशेटे भी है, वो सब लेना चाहिए उनके हाथ से. Because people are not only shooting, they are literally chopping. I have one video where one of the men his head has been decapitated and put on a spike in the fields of a home. That is how bad and how inhumane some of them are. ये असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस का क्या कॉन्फ्लिक्ट है? एक और भी मुझे इसमें चाहिए clarification. So a lot of people believe the ground story just is that 1 minute. Let me put to you the whole question. AFSPA is removed in about half of Manipur, and most of that area is in the valley, I believe. Correct. And rest of the half the AFSPA has not been removed. Yes. So you think it is advisable to put AFSPA in the whole of Manipur or let the situation be as it is? I actually don't have an answer to that because I do believe that at the ground level, a considerable people that are from the state police, many people see them as mighties more than cookies. And people from the mighty community think that in the armed forces like the Assam Rifle, there are considerable amount of cookies with the interest of the cookies. So in such a pit, I don't want to comment on it because that's something that the government needs to Assam Rifles is a multicultural force. वो कोई मणिपुर की थोड़ी है. पूरे आर्मी तो आर्मी होती है. आर्मी तो आर्मी होती है. असम राइफल जाएगा. It is army. करेक्ट. असम राइफल्स जाएगा. असम राइफल्स अपना काम करेगा. पर लोगों को that is precisely what I'm saying. लोग बोल रहे हैं कि ये सब कुकी का चाल है. अगर स्टेट पुलिस जाएगा तो वो ये बोलेंगे कि ये मैती का चाल है. मुझे सिर्फ भारत सरकार को ये कहना है कि अंत में
किसी भी प्रकार से अगर हमें काम करना है तो पहले चीज ये है कि वो इन लोगों का आर्म्स जो है उनका आर्म्स रिट्रीव करना चाहिए, कॉन्फिस्केट करना चाहिए, और तभी वो ये जो वायलेंस हो रहा है वहां पे वो खत्म हो जाएगा। तो पीस इतने नॉट आर्म्स जो हैं ये कैसे लूट लिए गए इतनी आसानी से? योर गेस इज एज गुड एज माइन, संजय. Your guess is as good as mine. Maybe they were weak. Maybe they were weak policemen manning it, or weak where armed. are most of these armories located? ये किस एरिया में located है? I really can't say that right now because I'm not surely aware. But I do know that a lot of I'll tell you what the problem is also, that very soon they have taken the arms, but the bullets will run out from whatever they've taken the arms. So I guess at times people are saying, let the bullets run out, the arms will be useless over there. But what we're not understanding that is with each passing day, the hatred is spreading. Everybody's taking an opportunity to divide Manipur either way, whether it's the mighty or the cookies. The good part is the Nagas are sitting and watching and doing nothing. There's like, okay, we'll just watch and we'll see Yes, what will happen. Naga Kuki have an old history. Correct. So they are just saying we will sit down and watch, and then we will decide which side of the fence to take. But coming back to the most serious bit, was the violence pre-planned? I am of the opinion that it was. Foreign Okay, hand? and definitely, undoubtedly, actually, there has to be foreign hand in this. Because even before the violence erupted, maybe just a day or two, there were a lot of messages going on in the international circuits, especially the pastor circuits that are around, that Manipur is burning, pray for it, even before it reached mainstream media. So the appeals that Christians are in danger came from pastors somewhere on the 4th or the 5th of May, even before India woke up to the probability of what was going on in Manipur. They were aware. Now, I'm not saying that it is wrong for a pastor to call out for help or to make others aware or anything of that sort. But my worry is that such messages have been one-sided, where it is only shown that it is the Hindus that are targeting the Christians. I went and met a cardinal. I won't tell you of which state, but I met a cardinal recently. And he literally fired. Cardinal means Catholic? Catholic, yeah, a senior Catholic church leader. But I think the And main church there is Baptist. no, not in Manipur. I'm not talking about Manipur. I'm talking about in general. When I went and met a cardinal from one of the states in India, he categorically fired me, saying that, where is this any work of peace in Manipur? See, the Christians are dying. You are a Christian. You're a Christian leader. You have an influence. Why aren't you raising an issue about it? And I tried to explain that it's not religion. He says, how can you be so sure? You haven't gone there. So I went there now. I went and met the Christian leaders also over there. They are not saying it's a religious conflict. But Cardinal Gracious came out and saying that it's a tribal conflict. Cardinal Gracious also came out and said it is not a religious conflict, but not necessarily that everybody shares his view within the senior clergy. What does the Because they Baptist are church all, say? the Baptists are of the opinion that these are ones I met in Manipur. They also are of the opinion that this is not a conflict of religion. They were very categorical about it. The reverends that I spoke to over there were very clear. Even though I couldn't go to Churachandpur, I had an interaction with a few of them. I was even trying to take a helicopter to get to Churachandpur. However, it started raining, and then I was advised not to take that. But I will. I'm going back again. So Anyone except Meitei and Cookies are free to travel? no, they're not free to travel. They're getting stopped. They're not free to travel. They were not allowing me to travel because Maitis were upset with the media.
I was told that very straight, that your media is responsible for the negative image that the Maitis are getting. They wouldn't allow me to pass till I had to stop and actually talk to them. And finally, but they were very nice. I mean, they were aggressive, but not violent. Aggressive. I'm okay with aggression. I'm fine with that. You know, the guys, the Meetup IBs had weapons, some of them, and that is also fine with me. But it was not. See, that's the point, Sanjay ji. The point is, ये लोग बुरा है ही नहीं. You know, you have to interact with them to know they're not bad. They're just hurt and angry. दोनों तरफ से इतना हेट भरा हुआ है उन लोगों में, इतना जल्दी. आई मीन समथिंग इज जस्ट. तो ये तो इनका जो है इस चक्कर में ये पूरा का पूरा नारकोटिक्स ट्रेड भी तो अफेक्ट हो रहा होगा. ऑब्वियसली पर हर कोई आदमी वहां पे नारकोटिक्स करता नहीं है ना. है परसेंटेज लोग हैं वहां पे. अगर आप देखोगे कुकी की जगह पे सम ऑफ द प्लेसेस, वेयर इज द डेवलपमेंट ओवर देयर इन द हिल्स? They're not really great looking places, even in Imphal. There is no great development in Imphal either. Yeah, that's what I'm saying. जो मुझे याद है कि वो आपके वॉर मेमोरियल वगैरह जो बने हुए हैं, जो कुछ बने हुए हैं, वो तो वेरी पुअरली केप्ट. हमें पूरे इम्फाल में हम देख रहे थे कि कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, कोई मॉल मिल जाए, वो भी बड़ी मुश्किल से जाके कोई मिला. जहाँ पर एक आपका अगर यदि आप मैकडी जो है वो पूरे इम्फाल में ढूंढ रहे थे, तो वो भी बड़ी मुश्किल से मिला. तो कोई डेवलपमेंट बहुत ग्रेट नहीं है. मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है. मोइरांग में गए हम, वी वेंट टू मोइरांग, और मोइरांग में जो वो मेमोरियल है सपोज टू क्लोज एट 4:30 और समथिंग. हम 4 बजे गए तो वो बंद हो चुका था, और वहां पे कोई भी रिप्लाई करने को नहीं था. यार हम इतनी दूर से आए, हम वो नेताजी का मेमोरियल देखना चाहते हैं. Nobody is available. वही तो प्रॉब्लम है वहाँ पे. पर संजय जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. जब मैं था वहाँ पे एक रिलीफ कैंप पे, माइती वाले रिलीफ कैंप पे, और एक और भी नॉर्थ ईस्ट में देखा मैंने. I went as observer to मेघालय एंड मणिपुर गया मैं वहाँ पे. वो दिन का काम स्टार्ट तो करते हैं IST से और बंद करते हैं लोकल टाइम से. करेक्ट. नो बट आई विल टेल यू वन थिंग संजय जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ. तो वहाँ पे जब मैं मेहती रिलीफ कैंप पे गया था, तो करीबन 1 बजे या 1:30 बजे 1:30 का समय था. तो कैंप में 6 लोग थे वहाँ पे, अपने काम कर रहे थे वहाँ पे, एंड इट वाज लंच टाइम. तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आप लंच करोगे? आई सेड या श्योर, व्हाई नॉट. So they had rice and dal, and you know, I had an amazing experience because I sat on the floor for probably like the 3rd time in my life, you know, and ate beautifully. They were very nice. It was nice to sit around with them and eat very simple food of dal and rice in that relief camp. And they found it very humorous because I'm a little chubby guy, you know, who sits on the floor trying to eat with his hand from the floor, which is a little difficult. But then I went to, this was in Moirang, yeah, Moirang. And then I went to the cookie side the next day, and I had food with them as well, and we sat on the floor again. You see, at the base level, and that's where what I look at as a person who works towards in conflict zones and resolving conflicts, and is that you have to look at people to find solutions. So by and large, इनके जो दिल है बहुत ही अच्छा है. They're good people. सिर्फ दिमाग में किसी ने कुछ भरा हुआ है वहां पे कि आपको लड़ाई करना जरूरी है. Correct. So let's hope things improve, क्योंकि I was quite impressed by the presentation made in the parliament in the Lok Sabha by the Home Minister. काफी comprehensive था.
Correct. spoke for more than an hour. और राहुल गांधी is still not impressed. I don't know what he wants in life. मुझे नहीं समझ में आता. हो सकता है कि इनका भी बड़ा इंटरेस्ट है कि मणिपुर में things keep boiling. हालांकि I do not see how he benefits electorally from this by keeping the fires burning. I have no clue why he should continue doing this unless he is habitual of doing that. It's based on conflict is based and propagated as a religious conflict. And that is the base of creating any divide in this country. So that's what everybody is doing. Do you know how many messages have gone to the Christian community? Not only my mother's got a couple of messages. It's one of the reasons she approved my travel to Manipur. She was like, "Oh, Baba, see what's happening. They're saying that the Christians are dying, and the BJP majority party is keeping a blind eye." I said, "I'm not going for either of those reasons. I'm going to go there because I know in my heart that the people of Manipur are good. So something's gone terribly wrong. Yes, they will fight. Kukis are headhunters, Nagas are warriors. Maitis are people who are there, who are strong people. Of course, there's going to be, high blood running over there, But that doesn't mean you kill each other over somebody else's problem. जो वहां पे कंट्रोल करना चाहते हैं, नार्कोटिक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तुम लोग अपने आप को क्यों मार रहे हो वहां पे? तुम्हारा क्या फायदा है? एक इंडिविजुअल कॉमन मैन जो अभी एजुकेशन भी दे होगा वहां पे बराबर, आएगा समय पे आएगा, क्या करोगे आप लोग वहां पे? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सावियो. अब इस चर्चा को विराम देते हैं. थैंक यू वेरी मच. दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम. जय हिंद.